Do I start now? Yeah, sure. I hope all the participants are here. They will join, madam. Little bit time. Let we start. They will join. So we can wait for a few minutes if you want, because I just see only 8 or 9 people who have joined yet. Okay. So, very good evening to you all, and heartily welcome to all participants as well as the keynote speaker for today's session, Aditi Yadav Math, and the chief organizer of the series, Honorable Principal M. Bedkar sir. Today's topic for presentation is data science and future technology. Now, this topic, as I have mentioned, Aditi Yadav madam is there to present over here. Madam is a data scientist precisely from Goa, India. Now, this is the brief introduction about the madam, keynote speaker. Now, I request you, madam, please start your presentation on the topic data science and future technology. You are most welcome. Thank you, Prashant. Thank you, sir, for giving me this opportunity. So, as Prashant has already given my introduction, I'll just repeat myself. I'm Aditi and I'm working as a data scientist at Precisely India, and my office is in Goa. So, today I'll be explaining why data science is nowadays booming a lot, and what are the reasons and what are the things that comes under data science. Sorry for my voice, I'm quite not well today. So I consider this session to be very interactive. You can ask any question in between, and I'll be asking multiple questions to you all so that you all will also interact. So, meanwhile, I'll share my screen now. Yes, madam. You share your screen, but first you start your presentation, and later on at the end of the time we'll discuss. Participants will discuss, if possible. Sure, sure. I hope my screen is visible to you all. Yes, madam. It's clear. Clear. Okay. Okay. So, first I'll start with the question, what is data and why nowadays data is being so discussed? Can anyone tell me why? Data means it's a collection of information, madam. Did you hear, madam? It's a collection of information. Actually, you are saying this vice versa, but yes, sort of. Anyone else wanna give it a try? Just give me a minute. I don't know why this is not presenting on full screen. Yeah, now. So basically, information is collection of meaningful data from where we get insights. So data is the rawest form of information, you can say, and anything can be data. Let's say your age, gender, or maybe the color you are wearing today, or the fabric you are wearing. From anything to everything comes under data, even what is your pulse rate and all these things. So basically, data is everything around you, including you. You can say this. Let's say, for example, if you want to see why you yourself is a data, you can see that in census, you are getting this thing that now you are a part of census. You are getting counted. So everything that
is around you and including you is a data. So now coming to the second part, how many type of data we have? Anyone? You can even read the screen and then tell me how many types of data we have. Am I audible? Yeah, yeah. Primary and secondary data, as far as statistical terminology is concerned. Sorry? Primary and secondary, we call it in the statistical language. Yes, primary and secondary data. So the primary data which we use for our analysis and that contributes the major part of analysis is our primary data, and the other rest of the data is secondary data. That's wonderful explanation. Apart from that, we can categorize data into two parts, that is numerical data and categorical data. So in numerical data, we all know we talk about digits and numbers. Whereas what is categorical data? Categorical data can be anything, as I said, like your gender, your ethnicity, your blood type, your eye color, anything, even your age and all. So age is not categorical data, but sort of you can say it comes under age when we do different type of analysis. So that is also further divided into two parts, like continuous and discrete data of numerical, whereas in category we have two types of data, that is ordinal and nominal data. So when we talk about continuous data, you can see the things that are continuous in nature. I know this is a bit mathematical, so I'll explain this with an example. Let's say you know that your weight is either your weight is not constant. So basically all the float values and the decimal values, you can consider that as a continuous data. Now you'll be asking why age is coming in a continuous data. So your age is not just digits, they are like digits and then some months and some days and then some hours and then some minutes and then some seconds. It is not just like 23 years, it is like 23 years, 20 days and 2 months and then these hours. So age is continuously increasing, that's why it is in continuous data. Similarly our weight, that is not constant. So for continuous data, I can say all the data that comes with decimal in it, you can consider it as a continuous data. And for discrete data, the number that doesn't lies in continuous data is simply a discrete data. Let's say you want to count how many students are there in your class, or maybe how many of you holds A certificate or B certificate. So basically, why we need data? That is the biggest question. Anyone? Anyone wanna give any type of insight why we need data? This can be a random answer. किसी भी योजना को पूर्ण करने के लिए या उससे संबंधित कोई कार्य करने के लिए या इसके अलावा भी कभी किसी चीज के बारे में जानकारी करने के लिए हमको उसके आंकड़े और डाटा बहुत जरूरी होते हैं। जी जी बिल्कुल। अरे आई एम वेरी सॉरी, मैं पूछना भूल गई, क्या आप सब कंफर्टेबल हैं जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ, या मैं थोड़ा और स्लो एक्सप्लेन करूँ या हिंदी में एक्सप्लेन करूँ? ठीक है, बहुत लैंग्वेज आप हिंदी इंग्लिश बोल सकते। ओके, सो जैसा सर ने कहा कि हाँ हमें डेटा की ज़रूरत पड़ती है किसी भी चीज़ के आंकड़े देखने के लिए। और कोई कुछ इंसाइट देना चाहेगा व्हाई वी नीड डेटा? For the purpose of getting some solutions, there are some problem without which data you cannot resolve it. And आपको चीज चाहिए, the outcome चाहिए, तो that cannot be done in isolation. So we need to have the data. करेक्ट। तो हमें प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए भी डेटा चाहिए। जैसे मैंने बोल दिया कि इंडिया की एवरेज यूथ एज क्या है, तो आपको डेटा चाहिए।
चाहिए, जैसा सर ने बताया सेंसस चाहिए. सो बेसिकली अगर मैं किसी कंपनी की बात करूं या फिर डेटा साइंस या डेटा एनालिसिस की बात करूं, तो डेटा इज फाउंडेशन ऑफ एनी कंपनी. उसमें कितने एम्प्लॉयज हैं, उनकी कितनी एवरेज सैलरी जा रही है, उनका नेट प्रॉफिट कितना है, उनका ग्रॉस इनकम कितना है, वो किस फील्ड में है, उनका कितना कंपटीशन है. ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर डेटा. सो डेटा इज बेसिकली फाउंडेशन. Now I'll explain the difference in between the data science, data analytics, machine learning and AI, because a lot of people get confused कि data science पे बात करें या data analytics के साथ जाएं या फिर machine learning करें या फिर इन सब में difference ही क्या है. So सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि analytics और analysis में क्या difference होता है. Does anyone give me a broader idea? Any wild guess can work. आप चाहें तो मुझे कुछ भी आंसर कर सकते हैं. We'll draw some inferences using some techniques of statistics, like that. I think it is almost similar to that. The business analytics, you can call solution, finding solution using the IT based tools. What I presume. जी जी. Even the problem, कोई भी problem को solution निकालने के लिए using the data and making use of the some statistical tools, we'll draw the inferences or conclusions. That's called analysis. Yes, quite true. And what about analytics? Maybe the using of IT, mostly IT solutions for the purpose of, again, the problem area. Because I'm not much well with the analytics. Okay. Okay, quite closer. Did anyone want to give it a try? What is the difference in between analysis and analytics? Okay, considering this silence, I'll say when you see this black dashed line, consider this as a present, and whatever is there at the left side of the screen is the past, and whatever is there on the right side is the future. So when it comes to analysis and analytics, the major difference is Ma'am, 1 minute, ma'am. yes. Analysis is regarding with past things which have been already happened, Okay. and analytics is regarding with present things. Okay. Okay. Quite good. Quite close. So considering you as at standing at this black line, that is your present. Now when you look back to the data and you find Is it yes. necessary that past things only be analyzed? So past thing, even in present, even to forecast, to putting also analysis can be done of how the forecasting of whether it is analysis or no. Somebody has said that is past. I don't agree with that answer. What do you say about this? So basically, I didn't give the answer yet. I am yet to give the answer. But I really appreciate the way you explained it. We have future forecasting and future analysis. So when we say about analysis, on standing on present and we look back to the data and we try to figure out how and why anything has happened. So when we try to answer the question of why and how, it comes under analysis. And we try to figure out what to do next, comes under your future, that is your analytics. So when it comes to future, we have weather forecasting, not weather analysis. So this is what is the broader difference in between analysis and analytics. Yes.
Does anyone is saying something in between? Okay, so I hope my explanation is pretty clear that when you try to answer why anything happened or what were the previous trends. So when you try to answer the questions, how it happened, why this happened, what happened, all these things comes under analysis. Whereas when you try to answer the questions like what to do next, what comes next, what should be our course of action, all these things comes under analytics. So now you can see that we have a broader part of advanced analytics. So analytics itself consider both analysis and analytics, because future cannot be defined or predicted without knowing the past. If you know the past trends, then only you can predict, okay, if people are purchasing sweaters in October more, then we should increase our production by June so that we can fulfill it by November or October. So all the analysis, let's say this only thing like when to produce more and when to stop production, all these decisions are being taken in for future based on our past decisions. So in advanced analytics we have a lot of terminologies. Nowadays people are pretty confused, like what is business analysis, what is business analytics, what is business intelligence, and what is machine learning and data analysis and data science. So consider all of these colorful data. If you'll see that you have a broader case study of a business, that how the business has been started, how people are working there, how many people are there. Sorry. So considering this, when you say a broader perspective of business, okay, this is the final goal, this is the output of business. Let's say if you'll talk about Flipkart or Amazon, now they are service providers, so they know the broader objective of their product, ki we are going to provide services to the users and the business people, so we'll be behaving like an intermediate. So if you'll talk about the case study of फ्लिपकार्ट और अमेजन, सो दे विल से हमारे पास इतने एम्प्लॉयज हैं, इतना उसके अंदर ट्रेंड है, इतने स्किल्ड है, इतने सेमी स्किल्ड है, इतने अनस्किल्ड है, उनका पे स्केल ये है, हमारा नेटवर्थ इतना है. सो दिस इज ब्रॉडली कम्स अंडर बिजनेस केस स्टडी. So in business case study, when we prepare the reports using data, कि इतना इतना लोग था, इतना इतना उनको हमने वेजेस दिया, इतनी इतनी टाइम से वो हमारे साथ काम कर रहे हैं. सो first thing comes under business case study is the data preparation, that is preliminary data report. So from here, when we prepare the preliminary data report, the data comes into the picture. And when data doesn't come solely, it comes with a lot of things. Either you want to know what happened in past, either you want to know what our business is going to give our future people, or you want to know the future business insights or the competition in market. So what after the data report, we try to do the visualization part and we try to get insights from it. So when we get data insights, so based on those data insights, let's say we have 5 competitors in market and we have 500 capacity. So this is a data insight which you get from a data team. So you pass that data insight to the business intelligence team. So now business intelligence team will basically do visualizations using, let's say, Power BI or Tableau, and they just show you the insights. Okay, this is the data, how it looks like, and then they'll give you the future insights. Let's talk about one example.
now you have a food cart of Zomato. Let's consider it this way. Now Zomato will not give you the same food cart as the other one is getting. We all will get different type of discounts. We all will get different type of coupons. Why? Can anyone tell me why? Am I audible to you all? You're audible, but we are not able to get what you said. Okay. I'll try it again. So basically हम सभी जोमेटो यूज करते हैं, तो हम सभी के पास जोमेटो के अलग अलग कूपन्स आते हैं, सभी को अलग अलग डिस्काउंट्स मिलते हैं और सभी अलग अलग टाइप के डिशेस ऑर्डर करते हैं. तो जोमेटो इतना हम सभी को अलग अलग सर्विसेज कैसे प्रोवाइड कर पाता है? कैन एनीवन गिव एनी टाइप ऑफ आइडिया कि जो कूपन कार्ड मेरे पास आया है, क्या वही तो किसी और के पास कोई दूसरा कूपन कार्ड क्यों गया है? जोमेटो उसके सारे कस्टमर्स को अलग अलग क्यों ट्रीट करता है? Maybe they using some sort of analytics hereby. Yes. Yes, it is part of analytics. It has been programmed, programmed, and it will be displaying different people, different. Yes. Anyone wanna give it a try? Today's topic is slightly technical, madam. That's all. Which is you're getting a lot of silence, no? Because this is slightly computers plus mathematical background. No. Okay. अच्छा, मैं ट्राई करती हूँ इसको थोड़ा और सिंपल वे में एक्सप्लेन करने के. सपोज हम सभी ने जोमेटो ओपन किया, तो किसी एक के पास 10% ऑफ का कूपन है, किसी के पास फ्लैट 50 रुपीज ऑफ का कूपन है, किसी के पास है अप टू 70% ऑफ. सो इन 3 लोगों के पास ऐसे अलग अलग कूपन्स क्यों? सो अगर आप ये देखेंगे तो शायद आप समझ पाए कि उनमें से कोई एक है जो या तो अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट ऑर्डर करता है, जो कॉस्ट करता होगा इन बिटवीन 150 रुपीज. एक होगा जो आफ्टरनून लंच ऑर्डर करता होगा, जो अप्रॉक्स 150 से 250 के बीच का कॉस्ट करता होगा. और एक कोई होगा जो ऑर्डर करता होगा डिनर, वो भी पूरी फैमिली के लिए, जिसका कॉस्टिंग अप्रॉक्स 700 to 800 पड़ता होगा. तो अब जोमेटो ने ये सोचा कि अगर मैं तीनों को फ्लैट 75% ऑफ दूंगा तो हो सकता है मुझे नुकसान हो जाए. एनीवन इज ट्राइंग टू से एनीथिंग? Ma'am, for the average discount for that company, if you give same discount to all customers, then it will be dangerous. If you Exactly. give 10%, okay? Yes, you cannot treat breakfast wala person is equal to dinner wala person, because Zomato is getting different type of revenue from both of them. हो सकता है उसको ब्रेकफास्ट में सिर्फ 5 रुपए का ही प्रॉफिट हो रहा हो, वेरएज डिनर वाले बंदे पे जिसने फुल फैमिली ऑर्डर किया है उससे उसे अप्रॉक्स 200-300 रुपए का फायदा हो रहा हो. सो बेस्ड ऑन रेवेन्यूज जनरेटेड वो क्या करेगा, जो ब्रेकफास्ट वाला इंसान है उसे 10% ऑफ देगा. तो उससे क्या होगा कि जो उसने 75 से 150 के बीच का कॉस्टिंग किया था, तो उसे ज्यादा से ज्यादा 7 से 15 रुपए ऑफ करने पड़ेंगे. वेयरएज अगर वो डिनर वाले बंदे को फ्लैट 50% ऑफ भी देता है तो उसको प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि
700 की चीज अगर वो 350 में भी दे रहा है तो भी उसको कहीं ना कहीं 150 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, जो पहले 300 रुपए का हो रहा था। तो वो क्या करता है, अपने कस्टमर्स को डिवाइड कर देता है मल्टीपल पार्ट्स में। जो उसको ज्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं, जो उसको कम प्रॉफिट दे रहे हैं, कोई उसको एवरेज प्रॉफिट दे रहा है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत कम यूज करते हैं जोमेटो, तो जोमेटो क्या करेगा, उनको बार बार ऐसे फ्लैश करेगा कि आप हमारी गोल्ड मेंबरशिप ले लीजिए, हम आपको फ्री में दे देते हैं गोल्ड मेंबरशिप, या फिर गोल्ड मेंबरशिप का प्राइसिंग इतना कम रखेंगे कि जो आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है वो भी नहीं लगे। तो वो क्या कर रहा है, वो उसके कस्टमर्स को बटोरने की कोशिश कर रहा है। सो जोमेटो भी क्या कर रहा है, जो उसके पास अवेलेबल डेटा है उसको वो अलग अलग ग्रुप्स में बांट दे रहा है, और फिर उन ग्रुप के लोगों को एक जैसा कूपन दे रहा है। हो सकता है कि मेरे पास जो कूपन है वो आपके पास भी हो, क्योंकि हम दोनों ने जो इस टाइप का खाना ऑर्डर किया है उस टाइप से उसको सेम टाइप का प्रॉफिट हो रहा हो, तो वो आपको और मुझे सेम टाइप का कूपन भेजेगा। पर हो सकता है कि आपके किसी दोस्त को या फैमिली मेंबर को अलग कूपन मिले, क्योंकि वो अलग टाइप से ऑर्डर करता है। सो this is what I was trying to explain, that why data is so important and why we use data so intensively. Any doubt till here? Any doubt? मैडम इसका माना यह है कि ऑलरेडी प्री प्रोग्रामिंग के अलावा रहता क्या, सेगमेंटेशन ऑफ कस्टमर्स करके रहता क्या, सेगमेंट करके इस ये रेंज 100 to 150 जैसा आपने कंटिन्यूअस सीरीज जो बताया था इससे पहले फर्स्ट इनिशियली डिस्क्रीट जैसा 100 to 150 customers one batch and 250 to 500 then 700 to 1000 accordingly issue the coupon. Is it the so programming that are programming something is called in the computers? So basically it's not about programming, it's more of about concept. Let's say अभी मैंने आपको बोल दिया है कि उसने क्या किया है, ग्रुपिंग कर दिया है। So grouping is like in grouping what grouping comes under unsupervised learning. तो unsupervised learning में हम डेटा के ऊपर कोई लेबल नहीं लगाते हैं, इट इज कम्प्लीटली अनलेबल्ड डेटा, यू डोंट नो कि डेटा कैसा है, और फिर आप उसके नेचर के अकॉर्डिंग उसको ग्रुप कर देते हैं। जैसे अभी आपको स्क्रीन पे क्लियरली दिख रहा होगा कि 4 टाइप के अलग अलग सेगमेंट्स बने हुए हैं। तो अब क्या करेंगे, हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का यूज करके इनमें क्लस्टरिंग कर देंगे। क्लस्टरिंग करने के बाद क्या होगा, लाइक दिस इज द प्राइमरीली मेथड की क्लस्टरिंग कैसे काम करता है। कोई भी 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स लेकर के उनके सेंट्रॉइड्स बनाएगा, फिर उनको शिफ्ट करेगा। मैं टेक्निकल पार्ट पे नहीं जाती हूँ। तो उससे क्या होगा कि वो ऐसे धीरे धीरे करके उनको ग्रुप करना शुरू कर देगा। जहां पे सेम नेचर दिखने लगेगा वो उसको एक क्लस्टर बना देगा। जैसे कि आप इमेज 5 में देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि हम सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं। प्रोग्रामिंग बहुत इजी है, प्रोग्रामिंग कोई भी सीख सकता है। आपको प्रोग्रामिंग कौन सी यूज करनी है और कब यूज करनी है वो मैटर करता है। प्रोग्रामिंग में क्या है, कुछ नहीं है, आपको बस सिंटेक्स पता होना चाहिए कि आपको क्या लिखना है, मतलब कैसे लिखना है। यही तो प्रोग्रामिंग है। प्रोग्रामिंग इज व्हाट, हाउ यू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर। अगर आपको पता है कि कंप्यूटर पे प्रिंट लिखने से वो डिस्प्ले करेगा तो यू नो प्रोग्रामिंग। बट आपको कब प्रिंट लिखना है और कब नहीं ये मैटर करता है मेनली डेटा साइंस में। जैसे अगर मैं चाहती तो यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के सोच सकती थी कि नहीं, मैं जो कूपन है, अगर मैं जोमेटो में होती तो मैं बोलती नहीं मैं ये कूपन प्रिंसिपल सर को देती हूँ और ये कूपन टीचर को देती हूँ। हो सकता है कि उसका वाइसी वर्सा मेरे लिए ज्यादा काम करता। तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसी टेक्निक्स निकाल ली कुछ फिक्स्ड प्रॉब्लम्स के लिए। तो ऐसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट ब्रॉडली अगर आप प्रॉब्लम्स को क्लासीफाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ फिक्स टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं
उसी के वेरिएंट्स रहते हैं बाकी सारे। तो आपने क्या किया, फिक्स्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया और फिर उसके वेरिएंट्स पे काम करने लगे। जैसे अभी मैंने बोला कि जोमेटो का काम है, उसको कूपन्स बांटने हैं, तो उसने क्या किया, क्लस्टरिंग कर ली और डिसाइड कर लिया कि ये जो 5th इमेज में आप देख रहे हैं कि ये वाला जो ग्रुप है, ये ग्रुप बेसिकली बहुत ऑर्डर करता है और इनसे मुझे बहुत प्रॉफिट होता है, तो इनको मैं बड़ा कूपन देता हूँ। इस ग्रुप से, ये जो लास्ट वाला ग्रुप है, इससे मुझे कम प्रॉफिट होता है, तो इनको फ्लैट कूपन देता हूँ या नहीं भी देता हूँ। अगर मैंने ये कस्टमर लूज कर दिया तो मुझे कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो इसी टाइप का प्रॉब्लम लेट से जोमेटो की जगह एक ग्रोसरी वाले को आ गया। उसको नहीं समझ में आ रहा है कि उसको उसके कस्टमर्स को किस टाइप से बांध के रखना है, तो वो क्या करेगा, अपने कस्टमर्स के लिए एक कूपन कोड निकालना शुरू कर देगा। प्रॉब्लम अलग अलग है पर दोनों का एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव सेम ही है कि उसको ये फिगर आउट करना है कि उसे उसकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है और उस टारगेट ऑडियंस से उसको मैक्सिमम आउटपुट कैसे लेना है, उसको अपने कौन से कस्टमर्स बांध के रखने हैं और कौन से को नहीं बांधेगा या थोड़ा और ट्राई करेगा तो वो अच्छे कस्टमर बन जाएंगे। सो बेसिकली प्रोग्रामिंग एक बहुत छोटा पार्ट होता है डेटा साइंस का। अगर आप यहाँ देखें इस इमेज में वापस से, तो इसके अंदर आपको पता चलेगा कि पूरा का पूरा पार्ट सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स पूरे क्लियर है कि आपको कब फोरकास्ट करना है, आपको कब पिछले डेटा के ऊपर एनालिसिस करना है, आपको कब क्या करना है, तो आपका पूरा काम बहुत इजीली हो जाएगा। अब जैसे आपने मुझे बोला कि क्या प्रोग्रामिंग के थ्रू कर सकते हैं, तो अब हम वापस से मशीन लर्निंग और प्रोग्रामिंग पे आते हैं। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि प्रोग्रामिंग किसने डिस्कवर करी, मशीन लर्निंग कैसे आया पिक्चर में। सो पहले क्या होता था कि हम क्या करते थे, हेलो, am I audible? Yes, audible. ओके, सो पहले क्या होता था कि हम क्या करते थे, कंप्यूटर के अंदर डेटा डालते थे और ऐसे बोलते थे। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं कि मुझे सारे ऑड नंबर्स फिगर आउट करने हैं 1 से 10 के बीच में, तो मैं क्या करूंगी कि मैं 1 से 10 तक का डेटा कंप्यूटर में डाल दूंगी और उसमें लिखूंगी इफ अगर नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है या फिर उसके अंदर कुछ रिमाइंडर बच रहा है तो वो एक ऑड नंबर है। ये हम पहले यूज करते थे। सो दिस वाज आवर ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग मेथड्स। नाउ अब हम क्या करते हैं, हम इनपुट भी दे देते हैं और आउटपुट भी दे देते हैं, तो कंप्यूटर खुद हमें बता देता है कि अच्छा ऐसा है तो आप एक काम करिए, ऐसा करिए। अब मैं पता है कंप्यूटर को ये नहीं बोलूंगी कि आप 2 से जो नंबर डिवाइड होते हैं, जो नहीं होते हैं 2 से डिवाइड और जिनका रिमाइंडर 1 आता है, वो मैं कंप्यूटर को लॉजिक नहीं बताऊंगी। मैं क्या करूंगी, अब कंप्यूटर में 1 से लेकर 10 तक के नंबर डालूंगी और सारे ऑड नंबर डाल दूंगी, 3, 5, 7, 9। तो अब कंप्यूटर क्या करेगा, वो खुद से ही इतना इंटेलिजेंट हो चुका है, खुद से ही इतना समझदार हो चुका है कि अब वो मुझे बता देगा कि जब मैं उसके पास 11 डालूंगी तो वो मुझे खुद बता देगा कि ये ऑड नंबर है। अब मुझे कंप्यूटर को सिखाने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर खुद ही समझदार हो गया है। So this is what machine learning is. So now machine learning. Understand the language again. Sorry sir, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। Please, I can't understand the language. The language is new. Sir, can you please be a bit loud? Yes, I'm having issues with the language. I can't understand it. You are having issues with? The language, like it's no longer English. अच्छा, लैंग्वेज में दिक्कत हो रही है। So should I continue with Hindi or English?
can only understand English. I can't. Okay. So basically, previously, what we used to do, we just give both. We just give input to the system, and then we write some logics and program there, and then computer give us some output. Now what we do, we just give input and output both, so that computer will understand itself what it has to do next. So with that, this with the same example, suppose by using previous method, the traditional programming method, if I want to know what all digits are odd number, then I'll just pass 1 to 10 as an input, and then I'll write the logic. If a number is not divisible by 2, and if I'm getting reminder as 1, then that number is an odd number. So I'm giving logic to the computer in traditional method. But now what I'll be doing, I'll just give input from 1 to 10, and then I'll also give the output, say 1, 3, 5, 7, 9. So now computer itself is smart enough to understand, okay, I have to figure out the odd numbers. Those numbers are not divisible by 2. So now computer itself is so smart that it knows when when I give input is 11 or 13. Now computer will be able to understand, okay, this is the odd number. So now computer itself designs a program for you. You don't need to design a program for computer. That is what machine learning is. That you make a machine learn and understand your requirements, and then you want machine to perform a particular task for you. You don't define the tasks. Now machine learning is basically divided into 3 types. That is supervised learning, unsupervised learning, and reinforcement learning. So in supervised learning, we basically have the labels of data. Let's say you know that this column is of age, this is of gender, this is of education, and these are the people who are eligible for loan. So in machine learning, you have some inputs and you have one output. Now, those input and output tags are well defined, that based on age, gender, and education qualification, you are trying to know whether you have to give loan to a certain person or not. So, based on this data, what you do, you just give this data to system, and system will tell. And when you will enter the age of 50, gender female, and education as masters in maths, then the system will tell you, okay, this person is eligible for loan, you should give it to you should give loan to this person. So this is what supervised learning, when you define the parameters of input and output. Now in unsupervised learning, you don't know that this column is of age or gender, and you don't know the predicted output. Let's say when we have seen those unorganized data, we can only see 4 clusters there. We don't know these clusters belong to what category and what not. So that is your unsupervised learning, when you don't know the labels of data. Now coming to reinforcement learning. This is a very interesting part. How many of you know about ChatGPT? Yes. Did anyone use Google Bart? Okay, so basically, ChatGPT is the best example of reinforcement machine learning, where you tell the computer the answer you have given me is correct or not, or you want the improved answer. So, in that, computer will ask you, would you prefer this answer or that answer? Because when you say, hi bot,
can you please give me an example of print statement? Then the bot will reply you uh, in which language you want to know. Then you will say, I want in C. Then bot will say import, hash include stdio.h, hash include all the other libraries. Whereas when you say the same thing that you want the print statement in Python, then bot will say print hello world is a simple thing you can do. So this is how reinforcement learning works. You tell computer whether your answer is satisfactory or not. If it is good, then a reward is given. If not, then you teach computer again. Okay, try to do this that way. So this is part of reinforcement learning. No, sorry, it was a mistake. Sorry. Okay, so shall I continue with this? Okay. Okay, I'll just try to wrap up soon because I have prepared a lot of things. Or else we'll just start Q&A session. I can see a lot of hands raised. Uh, Abha and Kamini and others. So we'll just start Q&A session. Okay, so Abha, you can start with the question. So I can read some questions here. रिसर्च में डेटा सैंपल साइज कितना परसेंटेज होना चाहिए? सो बेसिकली हम जो बिग डेटा होता है उसको हम हमेशा चंक्स में डिवाइड करते हैं. ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है. इसके अंदर क्या होता है कि बेस्ड ऑन योर डेटा एंड योर मॉडल यू आर यूजिंग, आप क्या करते हैं, डेटा को डिवाइड कर देते हैं. लेट्स से एक बहुत बड़ा डेटा है, उसका मैंने 10% चंक पे पहले एनालिसिस करना शुरू किया, तो मैं उसको क्या करूंगी, मैं उस 10% चंक में लेट्स से मेरे पास 1 लाख डेटा पॉइंट्स है, तो उस 1 लाख डेटा पॉइंट्स को मैं 75-25% में डिवाइड कर लूंगी, जिसे हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट बोलते हैं. उसमें डिवाइड करके मैं पहले 75% डेटा को ट्रेन करूंगी, से मेरे मॉडल को ट्रेन करूंगी. फिर उसके बाद उस 25% डेटा से मैं टेस्ट करूंगी कि क्या जो मैंने मॉडल ट्रेन किया है वो सही हुआ है या नहीं, और उससे मुझे कितना एक्यूरेट आउटपुट मिल रहा है. इसे हम बेसिकली ट्रेन टेस्ट स्प्लिट बोलते हैं. इसे हम 75-25 या 80-20 करके भी कर सकते हैं. तो सैंपल साइज पे आप इसे रैंडमली अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड करके भी कर सकते हैं. जब आप एक बिग डेटा पे काम करते हैं तो जैसे आपने डिसाइड कर लिया आप 75-25 का स्प्लिट करेंगे, तो अभी तो आपने उस स्प्लिट को 10% डेटा पे ट्रेन किया है, फिर आप नेक्स्ट 10% का चंक लेंगे, फिर आप उसको ट्रेन करेंगे. तो बेस्ड ऑन डेटा साइज, जितना आपकी कंप्यूटर की कैपेसिटी है,
आप उसके हिसाब से डेटा साइज को डिसाइड कर सकते हैं कि मैं इतने डेटा पे काम करूंगी या करूंगा. लेट्स से अभी एक रीसेंट एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ. आई वाज ट्रेनिंग वन ट्रांसफॉर्मर मॉडल जिसके अंदर मेरे पास सिर्फ 10,000 रोज थे, बट मेरा मॉडल बहुत हैवी था जिसको मैंने ट्रेन किया. तो उस एक मॉडल ने सिर्फ 2 इकोस के लिए ही 3 घंटे ले लिए थे. तो सिर्फ 10,000 का डिपेंड करता है आपका मॉडल कितना बड़ा है, एंड सेकेंडली आपकी कंप्यूटर कैपेसिटी कितनी है. वेरेज अगर मैं उतना सी मॉडल के ऊपर के मीन्स क्लस्टरिंग लगाती तो शायद 2-3 मिनट में मेरा काम हो जाता. सो सैंपल साइज 2 चीजों पे डिपेंड करता है, आपका मॉडल कौन सा है और आपकी कंप्यूटर कैपेसिटी कौन सी है. अगर इस पे कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. Sorry, Sunday, if my language was not understandable. I would try to improve this from next time. Or you can ask your questions and comment. Thank you, everyone, for your amazing comments. I really like this. Thank you, sir. It was an amazing opportunity. I really appreciate your efforts, and this was amazing part. Thank you, everyone. Abba, if you still have any question, you can ask.
जी धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी समंजलियाँ हैं, नई है हमारे लिए तो बहुत अच्छा वक्तव्य रहा मैडम का और नई जानकारी मिली है। तो पूछने तो हमारे पास, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है, नया जमाना है, तो हम इनसे मतलब हमसे तो आगे निकल रही हैं ये, लेकिन बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी हमें मिल जाती है। और डाटा के बारे में इतनी जानकारी मैडम ने दी, तो बहुत ही धन्यवाद मैडम का। बहुत अच्छी तरह समझाया, बहुत सुंदर समझाया, इसीलिए कुछ सवाल ही नहीं कहीं दिमाग में आए कि मैडम से क्या पूछे। जब वक्ता कुछ कमियां छोड़ देते हैं, कुछ जगह छोड़ देते हैं, तो सवाल भी उठते हैं। तो इसीलिए सवाल तो कोई दिमाग में ही नहीं आया कि क्या पूछे मैडम से, क्योंकि सारा ऐसा लगता है जैसे हम ही टेक्नोलॉजी में बैठ गए हो और सभी डाटा के बारे में हम अब जानते हो और हम ही काम कर रहे हो। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, समझाना आपका बहुत अच्छा था, क्योंकि हम हिंदी भाषा से आते हैं तो सभी समझ में आ गया। तो इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका मैडम। थैंक यू आपके इतने अच्छे कमेंट के लिए। लिटरली मैंने इतनी मेहनत शायद इसी टाइप के कमेंट्स के लिए करी थी, और आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। आपने जो कमेंट बॉक्स में इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखे हैं, मैं सबके कमेंट्स पढ़ रही हूँ, एंड आई रियली थैंक यू ऑल टू बी पार्ट ऑफ दिस वेबिनार। अगर आप सबको कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम इस वेबिनार को अब एंड कर सकते हैं, अगर प्रिंसिपल सर अग्री करें तो। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।